local self-government plays an important role, rather very important role in functioning of democracy at the grassroots level, right? And we know that the local leaders can judge and help the local people in understanding their problem and solving their problem. Hello everyone, I welcome you all to Guidance IAS, and today we are going to cover current affairs for the second week of August. And as I have already mentioned, today the first topic which we are going to read would be about the local government, the Panchayats or the Pesa Act. Okay, it is basically, it is what we, the first topic we have is the Pesa Act. We are going to understand each and every aspect of it. इसका origin हम समझेंगे, इसके जो भी provisions हैं हम समझेंगे, जो भी ग्राम सभास के पास जो भी powers हैं under this act, we are going to read them in detail and everything about this. So if in a very lucid language I would like to summarize this particular act, so this will be the provision of the Panchayat extension of scheduled areas. That's what it stands for, right? It is an act of 1996, or we call it Pesa Act. It is a law enacted by the government of India for ensuring what self-governance through traditional gram sabhas. For what? For which category? For the scheduled tribes. So what we can say that we can say that it extends the provision of panchayat to the 5th scheduled areas, right? Okay, now let us see that why was it in news and why are we reading it now. Though this is a very important topic, panchayats, municipalities, your local self-government overall is a very, very important topic both for prelims as well as for mains. But now we must understand, we must see कि अभी presently क्यों news में था, what is the precise context. So recently Chhattisgarh has implemented this Pesa, or Pesa rules 2022. We will also read in detail कि वो rules exactly क्या थे, right? So recently a political party unveiled a 6-point guarantee for tribals, including the strict implementation of Pesa Act. ठीक है, strict implementation यहाँ पर हमने क्यों बोला है? Because this is one of those problems or issues in Pesa we face in our country कि चीजें papers पे हैं but implementation पे problem है बहुत सारे चीजों की, right? बहुत सारे provisions की which comes under Pesa Act. So recently this political party has guaranteed कि implementation भी चीजों का अच्छे से होगा when it comes to scheduled tribe, or you can say the tribals, for the tribal people, for the betterment of their lives, right? Okay, now before we jump to the rules, जो छत्तीसगढ़ के जो अभी rules है, before we jump to 2022 rules, we first need to understand this Pesa Act of 1996, and we have actually more or less already have understood it कि it is basically a local self government through the gram sabhas. For what? For which category of people? For the tribals, right? Okay, issues पे हम आएंगे. But before that, there's one thing which I want to tell you कि exactly what are the powers which is allotted to the Gram Sabha under this Pesa Act. This is very, very important for us to know कि Gram Sabhas के पास, because this is the implementing authority at the local level, तो Gram Sabha के पास कौन-कौन सी powers होती हैं, right? When it comes to what? Pesa Act. So we will be dividing the powers into 2-3 parts. First is the developmental powers, right? We will be dividing the powers into 3 parts rather. Okay? The first one is the developmental powers. Developmental powers. Second would be the judicial power, as to what all decisions they can make, right? And I also want to tell you that these are the 2 important powers they have. And then next we have is ownership and management of natural resources, or you can say ownership powers, right? कि क्या चीजें वो own करती हैं. Okay, हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे. First thing first, developmental powers. What do we understand by developmental powers and what exactly are the developmental powers they have? The Gram Sabhas has. So basically developmental powers में आ जाती हैं. सबसे पहला है consultation before the land acquisition. So
if there is to be an land acquisition, tribals का कोई land acquire करना है, उससे पहले land acquire करने से पहले the the whatever the authority is there who is acquiring the land need to consult with the Gram Sabha, or you can say take the permission from the Gram Sabha, then only it is allowed. So consultation for land acquisition, right? This is really really important क्योंकि at the end of the day we are here under this act going to protect the natural rights of the ट्राइबल्स, ठीक है, जो भी उनके नेचुरल रिसोर्सेज के राइट्स हैं, उनकी लैंड के राइट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट all those rights through this act. Okay, that is why we have divided the categories into different categories, and we have put certain rights under them. So the first one was this. Second one was this can also prevent, the Gram Sabha has also power to prevent the land alienation, right? Okay, hanji. So this is the second power. The third power, if we talk about, the Gram Sabha has also, or you can say prior approval is also needed for all the developmental activities. Prior approval would be needed for all the developmental activities, especially in that particular area जहाँ पर tribals रह रहे हैं, ठीक है? तो ग्राम सभा की permission के बिना you can't really get these things done. So these are the major powers. There's another power which is the maintenance of the cultural identity and tradition. Again, a very very important point. I'm just erasing the first one so that I can write it here. Hanji. So is maintenance of cultural rights. And this is, I guess, again, one of the important ones. Kyunki not just the natural rights, or I mean the natural resources wale rights, not just the forest wale rights, not just the land rights we need to protect. We also need to protect the identity. We also need to protect the culture of the tribal, jo ki kahin na kahin it is at the verge of extinction. तो हमें वो भी protect करना है, and is one of the powers under Pesa Act. Now next one we have is judicial power. Judicial power में क्या आता है, that there should dispute resolution as per traditional laws and customs should be there, और ये ग्राम सभा की help से ही होगा. So as per traditional laws and customs, what the dispute should be resolved as per their own traditions, as per their own culture. ठीक है. Next we have is ownership power. So ownership power in terms of कि water का जो भी ownership power है, उनकी land का जो ownership power है, सबकी power जो है ग्राम सभा के पास होती है. ग्राम सभा के consultation से या फिर permission के बिना you can't really do anything about the natural resources. ठीक है. So you can't really take them away, you can say. ठीक है. इनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इज टू सर्व दी और मेक द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स बेटर, और एटलीस्ट टू मेंटेन देयर कल्चरल एंड व्हाट कल्चरल एंड ट्रेडिशनल थिंग्स. सो फॉरेस्ट राइट्स हो गए आपके. फॉरेस्ट राइट्स में आपके जो माइनर प्रोड्यूस होते हैं, फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस होते हैं, वो वाले सारे राइट्स आपके ओनरशिप राइट्स में आएंगे. ठीक है. सो दीज वर सम ऑफ द राइट्स व्हिच आर गिवन टू द ग्राम सभा अंडर द पेसा एक्ट, क्योंकि ग्राम सभा इज द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, इज द मेन बॉडी व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एक्ट. नाउ let us just look at this chart wherein certain rights are given, जिसमें सबसे पहला है land acquisition. Like I've told you, land acquisition का rights है उनके पास. Forest produce, mines and minerals, agri produce market और money lending, ये कुछ rights हैं उनके पास. But there are still certain states जहाँ पर ये land, जहाँ पर ये जो rights हैं are not being implemented properly or not implemented yet. Let's just look at those states. So there are 10 states जहाँ पर ये notified tribes हैं, but out of them there are 7 states जहाँ पर ऐसे कोई rules ही नहीं है where using where we can implement the things using those rules. ठीक है.
इफ वी प्रिसाइसली टॉक कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं एज ऑफ नाउ और कहाँ पर कौन से राइट्स अवेलेबल नहीं है, दैट इज वाई दिस चार्ट इज हियर. सबसे पहला आंध्र प्रदेश, इफ वी टॉक अबाउट, अभी इट यू नो दे आर डिफरेंट, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बट अगर हम इनको इकट्ठा एक इंक्लूसिव पढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश में जो राइट्स हैं, लैंड एक्विजिशन के राइट्स अभी नहीं अवेलेबल हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के भी नहीं है, एक्साइज के भी नहीं है, माइंस मिनरल्स के भी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट और मनी लैंडिंग इन सब के नहीं है, राइट. बट छत्तीसगढ़ ऑन द अनदर हैंड दे हैव these land acquisition rights to the tribe, to the gram sabha, to the tribals, for the betterment of the tribals, for the betterment of their livelihood, and to basically to save their culture. ठीक है. एक्साइज के भी है, वेयर इफ यू टॉक अबाउट माइंस एंड मिनरल्स उसके लिए भी हैं, एग्री प्रोड्यूस मार्केट के लिए भी हैं और मनी लैंडिंग के लिए भी हैं, राइट. गुजरात में भी देर आर फ्यू राइट्स. इफ यू टॉक अबाउट एक्साइज, उसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स के भी राइट्स अवेलेबल हैं, एग्री प्रोड्यूस मार्केट के भी और मनी लैंडिंग के भी. ऑलराइट, हम सिर्फ जहाँ पर राइट्स प्रेजेंट हैं वो पढ़ लेते हैं, अदर्स में तो प्रेजेंट नहीं है, सो देर इज नो नीड टू लाइक रियली do them. Himachal Pradesh, first you need to remember these 10 states at least, right, which is Andhra Pradesh, Telangana, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Odisha, Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan. These are the 10 states. So if we were talking about Himachal Pradesh, where land acquisition rights are available, excise rights are also available, forest produce ke rights bhi available hain, but if we talk about agri produce market, then those rights are not available to them as of now. Okay, Jharkhand mein none of them is available except this, that too certain conditions are there. Odisha mein we have forest produce, we have excise, we have mines and minerals. Maharashtra mein we only have rights for forest produce. Madhya Pradesh mein if we talk about land acquisition के rights हैं, excise के rights हैं, and mines and mineral के rights भी हैं और agri produce markets के भी market का भी right they have got. The last state, Rajasthan, wherein mine and mineral rights only they have, apart from this money lending right. Other than that, no major rights are available to the tribals, or you can say to the gram sabha. Okay, before we proceed with the issues it has, this particular act has, we first understand that what are the present 2022 rules which is related to Pesa. So Chhattisgarh mein recently, since this context is about Chhattisgarh, so rules 2022 इट सेज कि जो भी मेंबरशिप होता है, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ. सो छत्तीसगढ़ पेसा रूल्स मैंडेट दैट 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा आर फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज. सो 50% ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा are from tribal communities, right, just to ensure their rights, and even in them 25% should be females, right. So this is one major thing about the rule, about what the rule has to say, right. Baki मैं बता चुकी हूँ, there are 10 such notified states. We have also just a while ago have seen the list as well of these 10 states. ठीक है, तो ये 10 states है, इसमें से only 7 has certain rules which can help in the implementation of what? Of Pesa Act. Rest does not even have such rules. So you can imagine this is also be considered as one of the issues of the act. All right. अब issues के बारे में देख लेते हैं. This is the last thing we have to deal when it comes to this act. पैसा के issues के बारे में देख लेते हैं. सबसे पहला, कोई भी लोकल गवर्नमेंट पे जब हमने रूल्स बनाने होते हैं, दैट शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द नेशनल लॉज और विद द स्टेट लॉज. ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है. और यू कैन से दैट द स्टेट गवर्नमेंट आर सपोज टू इनैक्ट स्टेट लॉज फॉर व्हाट? फॉर द स्केड्यूल्ड एरियाज इन कॉन्सोनेंस विद द नेशनल लॉज, राइट, ताकि इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो सके. बट वो हो नहीं रहा है. देर इज ऑल्सो अ लैक ऑफ
clarity, right? There is a lack of clarity in the provisions, or you can say there is also a lack of political will, right, while implementing the things, right? Third, consonance नहीं है between what? State and national laws, जो कि होना चाहिए. Only then we can imagine any, you know, कोई भी be it any scheme or be it any program to be implemented properly and on time and to reach the larger masses जिनके लिए भी वो desired है, right? And the third one is things are on paper only abhi, ठीक है? Things are on paper only. There are so many provisions, there are so many things which are only available on the paper. Ground level पे अभी काम होना काफ़ी ज़्यादा बाकी है. So these are certain issues you can quote in your mains examination when it comes to listing down the problems or the issues of Pesa Act. ठीक है जी? चलिए. That was all about the first topic. Next topic we have is judicial intervention in Indian economic decisions. We know judicial activism, judicial overreach, all these are the very, very important topic when it comes to polity, right? Let us try and see what is the present context. We will also see कि exactly क्या अभी हुआ है. We will see all the issues with examples. I'm going to tell you certain cases, certain example जहाँ पर हमें judicial overreach देखने को मिला है, वो सब हम अभी जानेंगे. ठीक है, चलिए. So first thing first, context देख लेते हैं. Recently Supreme Court proposed to create an expert committee of Election Commission, Finance Commission and Niti Aayog, RBI officials and others to investigate the economic impact of freebies. ठीक है, ये फ्रीबीज वाला कंसेप्ट आजकल बहुत चल रहा है. एवरी डे आई एम रीडिंग वन एडिटोरियल और वन आर्टिकल ओवर फ्रीबीज इन न्यूज़. ठीक है, इट्स बिन लॉन्ग नाउ कि फ्रीबीज के बारे में आर्टिकल आ ही रहे हैं रोज, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है. यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम हियर. ऑल राइट. What are the issues with judicial intervention in the areas of economic growth? क्या exactly issues हैं क्या? When judiciary intervenes, exactly क्या issues होते हैं? सबसे पहला है disincentivizing investment. Disincentivizing investment. What do we understand by disincentivizing investment? It actually means that it makes the private players or the private companies skeptical about what? About the future investments in any project. Now you can ask if there is any example. Yes, there is an example wherein we had witnessed a judicial intervention जिसकी वजह से investments कम हो गए थे. The example was Supreme Court cancelled the 2G spectrum and coal licensing. ठीक है, 2G spectrum के केस में if you remember 2G spectrum is one example. Coal licensing was another example. ठीक है, जहाँ पर इनको कैंसिल कर दिया था जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर को you know got certain or start having doubts in investing in the future projects. Next we have is policy paralysis. Now policy paralysis, what do we mean by this? Let me just directly come to the example so that you can understand it in a very, very easy language and in a better way. So what happened in 2021, Supreme Court asked the CBI to inquire into a case. Okay? I'll tell you the name of the case, but just understand the gist of it first. So Supreme Court asked the CBI to inquire into a case, जो case 2 decades पहले ही बंद हो चुका था, and CBI only was the authority who closed the case, but the Supreme Court asked to open it again and to inquire it in further. The name of the case was basically regarding the strategic disinvestment. It was regarding the strategic disinvestment of a company and we call it Hindustan Zinc Limited. तो ये वाला केस था जिसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीबीआई ने ही क्लोज करी थी कुछ टाइम पहले, राइट? सो व्हाट हैपेंस इफ सच थिंग्स हैपन कि first you are closing the case and then you are asking the agency, the central agencies to do
you know, to do the inquiry again. So in such cases, जो you know, जो executives होते हैं या फिर civil servants हैं या जो भी, you know, the concerned people, they get afraid somewhere to take such actions, ठीक है, क्योंकि उन पे आप बहुत पीछे का भी you can inquire or maybe you can bother them basically, ठीक है. So this is something what we call as policy paralysis, जिससे policies time पे implement नहीं हो पाती हैं, अच्छे से implement नहीं हो पाती हैं. Third, we have violation of separation of power. We know judiciary अगर executive और you know executive में या फिर आप बोल सकते हो में interfere करेगा, so this would be a violation of separation of power. Next, we have judiciary does not have expertise. So this is again really important. और ये this is one of, I feel this is that one topic, it is that one point जो कि बहुत सारे topics में आप common point की तरह use कर सकते हो कि कोई भी किसी का भी हमने challenge लिखना हो when it comes to when we are writing our mains answer, ठीक है. This is one point. See, there are common points, बहुत सारे common points होते हैं जो हम लिख सकते हैं. This is one of that common point जो हम लिख सकते हैं कि इस particular body के पास expertise नहीं है, इसकी वजह से this basically lacks into, you know, this should not be this shouldn't be there. Okay. Now issues of judicial overreach, as I've told you, ये वैसे तो सारे ही overreach के ही kind of sub paths हैं, but judicial overreach, what are the issues of judicial overreach? जब judiciary overreach करती है executive को, ठीक है, जब laws को, right? So judicial overreach का I want to give you an example. So in Goa Foundation versus Stesa's Sterlite case of 2018, let me just write it for you. Goa Foundation versus Stesa Sterlite case of 2018. What happened in this case? Judicial overreach हमने observe किया. What exactly happened? So Supreme Court halted the iron ore mining, which led to what? Vast number of job losses. ठीक है, Supreme Court ने iron ore mining को hold किया, जिसकी वजह से we witnessed decrease or you can say job losses हमने काफी सारे witness करे. This is one example. The other, there are so many examples actually, ठीक है. So this you can remember. The other thing or the final thing which you could conclude your answer with कि क्या अच्छा अभी क्या solution क्या हो सकते हैं, what should be done by judiciary, क्या इस चीज के solutions क्या हो सकते हैं. तो judiciary what should they do as a solution? सबसे पहले तो there should be a holistic, I would say, holistic decisions. The decision should be made keeping in mind every aspect of what the cons or what the pros could be of that particular issue, right? तो holistic decision एक होना चाहिए judiciary के through भी, executives के through भी, whatever the concerned authorities, right? Second could be cost benefit analysis भी हमें करना चाहिए before we come to cost benefit analysis भी हमें करना चाहिए before we come to any conclusion regarding any issue. Then the fundamental, what is fundamental? Fundamental is to make the responsible and sustainable decision. This is the most fundamental part before when we take any decision. And this is not just about judiciary, this can imply in our personal lives too, that the most fundamental part while we are taking any decision, that the decision should be what? Should be sustainable. ठीक है, sustainable वो decision होना चाहिए, and of course responsible also. Responsible also you can say. Right? So these are some of the, you can say, the solutions which could be done in this case. Right? Chaliye. That was all about the polity part. Now we have
next GS paper, international relation, the first topic we have is UN sanction regime. Recently UN का काफी ज़्यादा criticism हो रहा है, ठीक है. Let us directly jump to the context part. India has said to United Nations that credibility पे काफी सारे इश्यूज हो रहे हैं, यूएन की क्रेडिबिलिटी पे काफी कंट्रीज क्वेश्चन उठा रहे हैं. दैट इज व्हाई यूएन इज आल्सो इन द न्यूज, एंड ऑफ कोर्स विल सी व्हाट एल्स इज इन द न्यूज. यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस regime is at an all time low. Double standards and continuing politicization, double standards. So these are few of the problems. I'm underlining them because these are the problems. Double standard is the problem. ठीक है, किसी country को वो अलग तरीके से treat कर रहे हैं, whereas the other countries वो अलग तरीके से treat कर रहे हैं. So they are showing this double standard thing. ठीक है, continuing politicization is happening in the UN, have rendered to the credibility of the sanction regime at an all-time low. Okay, what exactly is the issue, or what is this double standard we mean by? So basically, there are countries like China, Pakistan, even Afghanistan to some extent. ठीक है, इनके रिगार्डिंग डबल स्टैंडर्ड्स यूएन शो कर रहा है, और यू कैन से these countries have adopted what selectively and double standards against what किस चीज के बारे में मैं डबल स्टैंडर्ड बोल रही हूँ? टेररिज्म, राइट. Taliban regime in Afghanistan, so you can also give the example of this because it is, you can say basically it is giving shelter to the terror group, और उसका नाम भी मैं आपको बताना चाहती हूँ. इट इज़ ISIL खुरासन, ठीक है, ISIL खुरासन. इफ़ यू रिमेंबर, इन्होंने अभी रिसेंट पीछे कुछ टाइम पहले एक जगह अटैक किया था, राइट. आई थिंक इट वाज अ गुरुद्वारा वेयर दे अटैक. काबुल में एक गुरुद्वारा था वेयर दिस ग्रुप अटैक, तो इट वाज इन न्यूज़ ऑल्सो. If we talk about background, हम United Nations Security Council की एक committee है, and that committee was established for the purpose of what? For the purpose of overseeing the implementation of the sanction measures imposed on Taliban-controlled Afghanistan, but eventually its scope has been enlarged to include the individual as well as the organizations. Since we were talking about United Nations Security Council, I thought to put some facts also for your prelims examination. So United Nations Security Council का जो this is one of the principal organs of United Nations. 1945 में ये बना था. हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है. एंड द चीफ मैंडेट इज व्हाट? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. दिस इज द चीफ मैंडेट. दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन मैच द फॉलोइंग, ठीक है. Though there are very less chances that UPSC will ask this, but state PSCs can definitely ask you in the match the following column wala thing, right? So that was all about it. Up next we have Iran may accept EU proposal to revive nuclear deal if and buts are very important. So if demand met. So Iran is saying कि okay, we will revive this deal, but if European Union gives us an assurance, the kind of assurance we want, अगर आप हमें वो assure कर देते हो जो हमें चाहिए, if we get that assurance, we are ready to revive the deal, ठीक है. आपको पता है 2018 में US ने withdraw कर लिया था deal से. उसके बाद Iran also had started enriching its nuclear program, right? But now this is the present update. Okay. So since this is a evergreen topic, it's a very, you can say very old one. So before I jump into the present context and the updates about this topic, I want you to understand little bit about the historical background also of this topic. So let's just start. The story started in 1979. Okay, let me just take you here. So story started in 1979. Iran received help from US for nuclear proliferation until Iran revolution. Actually, the relationship between the West. So what do we mean by this? 1979 tak the relationship between the Western countries of the America वगैरह, Western countries and Iran were not that bad, right? Things started getting worse or bad after 1979 when there was a revolution which started taking place in Iran. ठीक है. Iran we know is a Shia country, right? And we also know that it is a very conflicting zone. तो वहाँ पर कुछ issues होने लगे, right? And it was after 1970 only that Iran started enriching this nuclear program thing, right? And after that
since the time Iran started enriching its nuclear program, the Western countries, be it US, be it European Union, and even the UN, had certain problems with that and put sanctions over Iran from that time. And since, like, I mean, till today, they are, you know, putting sanctions only. तो अभी तक वही चल रहा है, ठीक है? But for us, this is important. 1979 हमने देख लिया that things, the story started from 1979, but what happened after 2000, after that in 2003? So IAEA, this body finds traces of enriched uranium Iran में, ठीक है? And हमें पता है US was against it, right? The Western countries was against it. So this body found the traces that they're enriching the uranium, right? Which is the major component of the nuclear weapon. Okay. Then in 2005, what happened? Tehran resumes, or Iran, you can say, resumes enrichment, resulting in the suspension of the international nuclear talks, and US called for UN sanction. ठीक है? UN ने बोला कि or to put more sanctions, US तब से अब तक यही कर रहा है. 2006 में what happened? Tehran succeeded in enriching uranium to 3.5%, right? And US ने फिर sanctions impose कर दिए. 2007 में what happened? Iran acquired sufficient uranium enriching centrifuge to produce a nuclear bomb. 2008-9 में वहाँ के जो president थे opens a uranium enrichment site at some places, ठीक है, इस्फहान में, right? And 2010 में Iran begins enriching uranium to 20%. Are you analyzing that the percentage, the enrichment percentage is increasing? They kept on increasing the enrichment basically, ठीक है? और जितना ज़्यादा आप enrich करोगे, it will be better, or it will, you know, it will be closer to for the dream of, you know, making yourself a nuclear power country. Let me just tell you this one fact कि ईरान ने NPT sign किया हुआ है, ठीक है, Nuclear Proliferation Treaty, and Iran has signed it. Though we, if we talk about our status, India has not signed it, ठीक है. 2012 में what happened? 20% enrichment begin, ठीक है, where Fordo. I'm going to tell you these. I'm going to, in a while, I'm going to tell you or share with you the locations of these sites also. I have a map for you. So don't worry, हम ये locations भी देखेंगे कि कहाँ पर exactly वो अपना uranium enrichment करने की कर रहे हैं actually. They're already in process. 2013 में what happened? International talks शुरू हुए, ठीक है, in following contacts between presidents, ठीक है, सब, you know, America और जो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे रूहानी और उस टाइम पे बराक ओबामा, उनके बीच में टॉक्स शुरू हुई. देन 2015 में फाइनली, क्योंकि उन दोनों के बीच में बात हुई, दे एंडेड अप with a what? With a agreement. That agreement famously is known as JCPOA, ठीक है, agreement, right? And it was a breakthrough deal which was decided between Iran and P5+1 countries, ठीक है. इसमें क्या था कि Iran said कि okay, we will stop this enrichment program, right? But what happened after what? After 2015, I have another map. What happened after Joint Comprehensive Plan of Action, which was signed in 2015 between, like I've already mentioned, between Iran and P5+1 countries. 2018 May, United States of America, when there was a Trump administration, they withdrawn from this agreement. They said ki we do not consider it, right? So they pulled it out. Okay, 2021 May, since the time they've pulled it out, the United States of America pulled it from this agreement, Iran started their enrichment program again. So Iran announced restrictions on this IAEA's ability to inspect the facilities, and soon after ended its monitoring agreement with the agency completed. 2022 में अभी presently what is happening, Vienna और दोहा में बातें चल रही हैं between Iran and US, which ended without any final decision. So this was the historical background. We started from 1979 and we are here in 2022. I hope the entire chronology is clear to you. The entire historical background is clear to you. Okay? Chaliye. Great. Now the question arises, the very important question ki, okay, even if Iran
gets or becomes a successful nation or becomes a nuclear power, what is the problem? There are so many countries who which are already a nuclear power. What is the problem agar Iran bhi ban jata hai to? See, I'll tell you, there will be a balance of power shift, okay, from western countries to little bit towards Iran. तो वो balance of power shift ना हो, इसीलिए western countries are opposing this move of Iran, right? Okay, so coming, Hanji, as I was telling you that I have a map for you wherein I'll be making you, wherein I'll be showing you where all are those sites. तो जो आप green color में देख रहे हैं, these enrichment energy, or you can say these are the nuclear sites which Iran has developed. So this is one is Fordo here. This is the Iran map, right? Fordo, right? This was converted from fuel enrichment to technology center. Natanz, now Iran's only uranium enrichment plant, right? Isfahan is one. Arak is one. This was planned heavy water reactor redesigned to avoid production of weapon grade plutonium. Then so these are few. Bushehr is one. तो ये कुछ nuclear sites हैं. उसके बाद जो research purposes के लिए they are using, one is Bonab, right, at this northern western side. Then we have the second one we have is in Tehran, ठीक है. इसके कुछ military complexes भी हैं which is situated in Parchin. One is here, right? और uranium mines जो हैं ये यहाँ पर बंदर अब्बास पोर्ट पे यहाँ पर situated है. This is again इंडिया के perspective से भी ये जगह important है. We are not going into the detail as to why it is important from the Indian perspective क्योंकि that is not the topic of the day. जब हम Iran Indian relationship discuss करेंगे तब हम ये ports और trade relations discuss करेंगे. And in few of my videos I have already discussed them though, right? So you can go and watch it out if you want to, right? So this is the map. Yeah. Now, since we know that US has withdrawn from it, तो इसके कुछ likely consequences हम quickly cover कर लेते हैं कि क्या consequences या क्या potential consequences हैं. So the first one is the partners might not be interested in a new deal क्योंकि अभी US ने withdraw कर लिया है तो जो और countries है they might not be interested. Erosion of America's credibility कि इतने सालों से you were there and suddenly you pulled yourself out. So the credibility पे एक question आपका उठ जाएगा US की credibility पे. It also increased the tension in the region, right? And Iran restart nuclear weapon program. This we have already seen कि जैसे ही उन्होंने US ने withdraw किया, ईरान ने अपना enrichment program दोबारा से शुरू कर दिया. Then we also have loss of international inspections and verification regime. This is also one of the likely consequences, or not just the likely consequences. All of this is already happening because US has already withdrawn from the deal or from the agreement. Right? Okay. Coming back. Yeah. Coming back. We have already done the background part. Now, coming back to our recent part, coming back to our recent context. So what's happening that Iran diplomat said Iran was reviewing the proposal. Which proposal? The proposal which European Union has given कि revive करते हैं ये nuclear deal को. So again, like I've told you, Iran is saying that if you give us the desired assurance, we will think about it. We will review this proposal. And also, you also need to make sure that there will be no future harsh sanction by the America. So ये कुछ conditions हैं Iran के, then only they will start or they will review and make things happen, right? चलिए, this was all about. I hope this topic is clear to you now. Historical background से लेके present context तक सब कुछ clear हो गया है. Next topic we have, as you can see in the background, next topic is related to the tribals again, though we have already done one of the topics. Pesa Act हम पढ़ चुके हैं. अभी हम कुछ tribals के health related issues के बारे में पढ़ेंगे. So the next topic we have is what? Launch a national tribal health mission, which is a part of social issues. So recently एक survey आया था, or you can say there was a report, Lancet report. It says, the name of the report you can remember, Indigenous and Tribal People's Health 2016. It says India has second highest infant mortality rate in the tribal people, next to Pakistan. Okay. Child malnutrition भी हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, which is like 50% higher than, which is 50% higher in
ट्राइबल कम्युनिटी. सो वॉट एवर जितना भी एवरेज परसेंटेज है उससे 50% ज़्यादा है ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, विच इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट कॉज ऑफ अ कंसर्न एंड वी रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट द ट्राइबल हेल्थ और द हेल्थ ऑफ द ट्राइबल people. 42 compared to 28% in others. Poor health infrastructure भी उनको provided है. I guess poor health infrastructure is one of the issues, not just for the tribal population but for us, you know, for the whole country only. So this infrastructure part we really need to work upon, not just for the tribals but definitely tribals को भी extra care चाहिए, because you know they already face a lot of problems, so we must pay attention on them. So there is 27 to 40% deficit in the number of primary health facilities and 33 to 84% deficit in medical doctors in tribal areas. Can you imagine this number? It's 33% to 84% deficit in the medical doctors of tribal areas. You can imagine the plight of tribal people living over there. Low participation. Another issue is low participation. What do we understand by low participation? So there is hardly any participation of the participation of the tribal people. There is no participation, you can say, or very low participation of the tribal people at the local, at the state, or at the national level in any of it. ठीक है, तो ये भी एक चीज हमें करने की जरूरत है. Apart from that, since we have seen the issues and problems, solutions तो हमेशा ज़रूरी होते हैं. solutions के साथ ही हमारा answer और हमारी life दोनों ही complete होते हैं. So solution, let us try to give some of the solution to the to the health problems of tribal. So the first solution I would propose, could be, which is to launch a national tribal health action plan to bring what the status of health and healthcare at par with the state, to bring their status, to bring their health status rather, or health care status at par with the state, right? State as in, or the, you know, the other communities or the other people. Also there is a need to address what? A very important issue. गवर्नेंस पार्ट. ठीक है, तो गवर्नेंस पार्ट में जितने भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं while we implement anything, while we implement any particular scheme or any particular program, the governance problems should also be addressed in a timely manner. Next is allocating the additional money, और you know, ताकि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने जो डिसाइड किया हुआ है, विच इज 2.5% ऑफ पर कैपिटा जीडीपी. ठीक है, हाउ मच? 2.5% ऑफ पर कैपिटा, 2.5% पर कैपिटा ऑफ जीडीपी, कि ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होना चाहिए ऑन व्हाट? ऑन हेल्थ. तो इस परसेंटेज को भी हम क्या कर पाए? रीच कर पाए. This should also be one of the agendas, and we can always quote such figures and such programs while we are proposing these solutions, or you can say the conclusion of any answer. Right? Chaliye. Moving back, this was all about the issue. I have a map here for you, wherein हम यहाँ पर थोड़ा सा distribution देखेंगे across various states of our country. So this is basically a map depicting the concentration of ST population across various states as a percentage of total population of the state. Okay, तो जो भी जहाँ पर भी आपको ये पिंक कलर में दिख रहा है, यहाँ पर आपको 50% से ज़्यादा concentration आपको मिलेगा scheduled tribes का, right? If you see this dark blue color, यहाँ पर 50 to 75% आपको देखने को मिलेगा, right? And if you see this green color, wherein it covers the Jharkhand and Chhattisgarh region, it has, you know, it has around 25 to 50%. And this yellowish region, wherein Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat comes, you will notice 10 to 25% of these scheduled tribe population. And this blue, the sky blue color region, or Deccan and southern regions, wherein Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, all of them comes. यहाँ पर you will see less than 10% of the tribals you will find
ट्राइबल पॉपुलेशन। यहाँ पर द वाइट वन हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में आपको ऑलमोस्ट नहीं देखने को मिलेंगी ट्राइब्स, ट्राइबल पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग देयर आर नॉट, बट वेरी लेस, राइट? Okay, so this was the concentration of the scheduled tribe population across various Indian states. Moving ahead with our next topic. Our next topic is on guardianship and adoption of minors. Okay, so recently क्या हुआ है? Parliamentary Standing Committee has said that there is an urgent need to amend Hindu Minority and Guardianship Act 1956 and accord equal treatment to both mother and father as a natural guardian. ठीक है, तो इसका यहाँ पर इस पूरे कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पर the meaning of this entire context can be divided into two parts. First, giving equal rights to mother and father both when it comes to the adoption rights of the minor, right? Second, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, but this also talks about giving adoption rights to the LGBTQI community, right? So LGBTQI कम्युनिटी के राइट्स देने के लिए भी ये बात करता है, along with giving और treating both the parents equally, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मदर्स के पास कम राइट्स हैं या फादर के पास कम राइट्स है, both should be at par, right? और अकॉर्डिंगली कि कौन क्या बेटर चीजें संभाल सकता है अकॉर्डिंगली। व्हाट इज द करंट लीगल स्टेटस इन इंडिया? सो इंडियन लॉ अकॉर्ड्स superiority to the father, which is wrong, which should be at par, and that's exactly what this parliamentary standing committee talks about, that दोनों को equally treat करना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें या हम शरीयत की बात करें, so application act 1937, this Muslim personal law, it says that the shariat or religious law will apply in case of guardianship, according to which the father is the natural guardian, right? But the custody vests with the mother until the son reaches the age of 7 and daughter reaches the age of puberty, right? This is what Shariat says. Now, what the parliamentary standing committee recommended, इन्होंने क्या exactly recommend किया है? हमने present legal status देख लिया है हिंदू मुस्लिम दोनों major religion में, but we also need to understand कि committee ने क्या suggest किया है, क्या recommend किया है. So committee only recommended actually कि we need to give equal right to both the mother and father, and also rights to both the parents, equal rights rather, and it also proposed the rights to be given to LGBT communities, and it also talks about Article 14 wherein equality of gender should be there. So you can relate Article 14 with this point कि दोनों ही parents को equal होना चाहिए, and this is conferred in our constitution also in under Article 14. All right, चलिए moving ahead with our next thing, and which is this chart जहाँ पर हम देखेंगे कि number of adoptions जो हैं वो हमारे काफ़ी decline करते जा रहे हैं over the period of time. Let's say for example हम in country adoption की बात करें तो 2011 में there were more than 5,000 adoptions. 2012 में 11-12 में it got increased, but then it kept on decreasing, not exactly kept on decreasing. 14-15 में it increased, but आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज भी देखने को मिलेगा. And where are we standing presently in 2020-2021? At near 3,000. इंटर कंट्री अडॉप्शन की बात करें, ठीक है, एक दूसरे की कंट्रीज से 628 था, and now we are standing at 628 था in 2011, and now we are standing at around 400 इंटर कंट्री अडॉप्शन की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है. So this figure also, I mean this chart also you can remember. आप कहीं ये डेटा आई एम श्योर आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो. So that was all about it. Up next we have minority rights से related कुछ ये कुछ present कुछ context है, which is recognition of minorities at district level. Recently Supreme Court ने announce किया है कि recognition of minorities at the district level is contrary to the law. और Supreme Court ने केरला education bill case 1958 में
रिजेक्ट किया था दैट माइनॉरिटीज बी आइडेंटिफाई एट द ब्लॉक और द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, बट हमें माइनॉरिटीज के बारे में आर फोकस शुड बी मोर अपॉन अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ इट, वेयर इन विल बी अंडरस्टैंडिंग सर्टन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस along with what, along with the minority status. और हम minorities को देखेंगे भी. I have again a map, a figure, a chart for you basically. So currently only those communities which is notified under which section, section 2C of the NCM, which is National Commission for Minorities Act 1992, by the central government are regarded as minority. और उसमें क्या क्या आपका आता है? Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrian या फिर Parsis जो बोलते हैं, Jains 2014 तक, and 14 में have been notified as minority communities. Let me just take you to this chart wherein you will see कुछ religious कुछ total population को हमने divide किया हुआ है, जहाँ पर हम यहाँ पर कुछ minorities देख लेते हैं. Christians 2.3% in number, Sikhs 1.7%, Buddhists 0.7%, Jain 0.4%, other religious groups 0.7%. ठीक है, तो ये कुछ माइनॉरिटीज के परसेंटेज हैं. यू कैन रिमेंबर, ये दीज आर नॉट द माइनॉरिटीज, बट यू कैन रिमेंबर द नंबर हिंदूज का 79.8%. राइट, कमिंग बैक द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, एज आई वाज टेलिंग यू कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहना है माइनॉरिटीज पे. सो देर आर थ्री आर्टिकल्स which deals with minorities, Article 29, Article 30 and Article 350 Part B. ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स बात करते हैं माइनॉरिटीज की. जब हम बात करते हैं आर्टिकल 29 की अगर हम बात करें, सो इट इज बेसिकली द राइट टू व्हाट, कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर. टू कंजर्व, you can say language, script and culture. There is one point which is to be noted here, very important point, कि जो article 29 है, it grants protection to both religious as well as linguistic minorities. For religious and linguistic what, minorities. Okay, to both these minorities, right? But यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, but it is not, you know, it does not necessarily means that it is restricted to minorities only. So ये वाला point आप याद रखेंगे. Article 30 wherein it talks about giving right to establishment and administer educational institution of their choice. So this talks about educational institutions of their choice. Of whose choice? Tribal peoples, the minorities I'm talking about. ठीक है, tribals हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक पढ़ लिया, तो अभी tribals are going in my mind, but it is minorities. Next we have is Article 350B. 350 क्या बोलता है? That it provides basically a special officer for linguistic minorities appointed by, so let me just write it for you. Special officer for linguistic minorities appointed by president, honorable president of our country. अभी change भी हुए हैं president, तो president हमारे लिए important भी हो जाता है पढ़ना. You never know, they can ask you in any of the examinations. ठीक है, चलिए, so that was all about this topic. हमने ये चार्ट भी देख लिया है. अप नेक्स्ट वी हैव अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सोशल इश्यूज में काफ़ी ये टॉपिक रहता है. यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन योर मेंस एग्जामिनेशन एज वेल फ्रॉम दिस टॉपिक. देयर इज़ अ स्कीम जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है. सो नमस्ते इज़ द स्कीम फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक. तो इन लोगों के लिए हम क्या बेटर लाइव प्रोवाइड कर सकते हैं. द स्कीम इज़ ऑल अबाउट दैट. Let's see. Ministry officials said that enumeration exercise soon to be conducted across 500 Amrut, which is Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Cities, is the part of Union Government's National Action Plan for Mechanized Sanitization Ecosystem, which is Namaste. ठीक है, ये है क्या एक्चुअली? ये एक जॉइंट वेंचर है. ये स्कीम एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन 3 डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. नेक्स्ट वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स.
ठीक है, इन तीनों मिनिस्ट्रीज ने मिलके ये एक स्कीम दे हैव पुट फॉरवर्ड. व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ आर दे गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज पीपल. सो इनके ऑब्जेक्टिव हम क्विकली देख लेते हैं. लेट मी जस्ट jot them out for you. The major objective of Namaste scheme. Objective. The first objective is, the main objective is to, this scheme basically wants that there should be a zero fatality of fatalities in sanitation work in India. So zero fatalities honi chahiye sanitation work में, ठीक है, कोई भी किसी की भी डेथ नहीं होनी चाहिए. This is one of the major objectives when we come to the scheme. The second one we have is no sanitation worker come in direct contact with the human fecal matter. No sanitation worker should come in direct what? Direct contact with human fecal matter, right? Second, it also talks about providing certain alternative opportunities in terms of what? In terms of work. कि इनके पास कुछ और काम करने के लिए भी होना चाहिए. ऑल्टरनेटिव वर्क ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज अटल पेंशन योजना. वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, राइट? एवरग्रीन स्कीम. Recently, what has happened pertaining to the scheme? There is, for Ministry of Finance, new direction. All income taxpayer will not be eligible to join Atal Pension Yojana from October 1. हम Atal Pension Yojana के बारे में देख लेते हैं. सबसे पहला इसका जो implementing agency है और the nodal agency is PFRDA, which is Pension Fund Regulatory and Development Authority, जो कि and it's a statutory authority to administer the national pension scheme also under Ministry of Finance. ठीक है, हम कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और कुछ प्रोविजंस भी देख लेते हैं अबाउट व्हाट अटल पेंशन योजना. सो दिस इज बेसिकली फॉर असिस्टेंस ऑफ पुअर पीपल एंड देयर सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रमोटिंग देम टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर स्कीम. 2015 में ये लॉन्च हुई थी, राइट? इसमें बेसिकली क्या है ये स्कीम? Pension money of rupees 1,000 to 5,000 according to the contribution will be given. Contributors की age क्या होनी चाहिए? 80 to 40 years of age होनी चाहिए. क्या क्या benefits मिलते हैं? Fixed pension मिलता है आपको for customers between 1,000 to rupees 5,000 if a person join and contribute between the ages of 18 to 40 years. Eligibility, who all are eligible, is open to all bank account holders. If you have a bank account, you are eligible to, and the age, of course, eligible for this scheme. Central government के जो contribution होगा वो 50% होगा. Like for example, if you contribute 100 rupees, the government will also contribute the rest of the amount, जो कि 50% वो contribute करेंगे. And the age of the pension starts at the age of 60 years. आपको pension मिलना कब से शुरू होगा? When you will be of 60 years of age. ठीक है? Just to quickly summarize it, we have talked about this 1,000 to 5,000 for life, and lifelong pension आपको मिलेगा for spouse after subscriber's death also, and the nominee receives 1.7 lakh to 8.50 lakh after the death of the spouse. These are again some of the more provisions of Atal Pension Yojana. Up next we have rice fortification. We know food industry पे हमारी government is taking certain steps, right, so that चीज़ों को हम बेटर बना सके, फोर्टिफाई कर सकें, फूड को फोर्टिफाई कर सके, सो दैट वी गेट न्यूट्रिशियस फूड, राइट? माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को हम कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकें. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक एजेंडाज और बेसिक आइडियाज बिहाइंड कमिंग अप विद सर्टेन आइडियाज, एंड वन सच आइडिया इज राइस फोर्टिफिकेशन. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट राइस फोर्टिफिकेशन इज, व्हाट आर द बेनिफिट्स, एंड what are the issues related with rice fortification. So rice fortification is the process of adding fortified rice kernels, containing micronutrients such as iron, vitamin B12, folic acid in the ratio of
remember the ratio. UPSC will not ask you. It is not even important. ठीक है. As per Food Safety Security Authority of India, FSSAI norm, 1 kg of fortified rice will contain how much iron? 28 mg to 42.5 mg, folic acid, this much, vitamin, this much. ठीक है, आपको quantity micrograms याद रखने की जरूरत नहीं है, but you must know that it is going to contain more the amount of vitamins and nutrients and micronutrients, right? And what else? Folic acids, ये सब इसमें ज़्यादा होने वाले हैं as compared to the normal rice we have. ठीक है, so benefits, it is very much clear to you. So these you can say it will be cost effective. तो एक काफ़ी अच्छी strategy है ये malnutrition को भी overcome करने की, right? And what else we will get through them? Vitamins, minerals, minerals like for example iron, iodine, zinc, vitamin A, D, to staple foods such as rice, milk, salt. ये सब I mean rice के अलावा हम fortify और भी सारे foods को करते हैं और उनका सबका जो benefit है ये यही है to increase the micronutrients in them, right? But what are the issues? Issues ये हो सकता है कि there is a term, I'm not sure if you all have heard about it, but there is a term and we call it as hypervitaminous. Hyper as the name indicates, it indicates which, you know, जब कोई चीज़ excess में हो जाती है, hypervitaminous, कि vitamins का excess हो जाता है, so these kind of foods can lead to that also. Another issue, and I think that is more important, that the results of such food are inconclusive yet, right? So results अभी inconclusive हैं, तो कुछ भी ऐसा प्रूव नहीं हुआ है, but the fortification factor does not there is also one point कि fortification factor जो होता है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं you know it doesn't last for long time, so it is not advisable to store the fortified rice for long. तो ये एक और issue है इसके साथ. उसके अलावा according to National Family Health Survey, 78.7% children and 75% in the district are anemic and suffer from malnutrition. तो ऐसी problems को be it anemia जो कि folic acid के addition से solve हो कर सकते हैं हम, along with that other malnutrition problems could be solved using these kind of what? Solutions. Next, in the first phase, fortified rice will be distributed in, okay, so you don't really need to remember where all, in which all district and which all distributed. Here we are only focusing upon the concept of rice fortification, its benefits and some of the issues related with this. Okay, chaliye, moving ahead. We've done this. Yeah, so since we were reading about rice, I thought to just give you a quick glimpse of the leading countries in the rice production. First, number one country is China. Second पे आता है हम आते हैं, right? So this our position you need to remember, very very important for our examination perspective, and even otherwise I feel कि अगर कुछ important है about India, and if we are comparing it with China, we must know our position. ठीक है, हम जिसके साथ compete कर रहे होते हैं, compete करने का सोच रहे होते हैं, उसके marks तो पता होने चाहिए, so that we can improve. So China stands at first position. We comes at second position rice production में. Third we have Indonesia, then we have Bangladesh. Top 3 आप याद रखेंगे would be sufficient. और top 3 में India भी आ रहा है, तो I don't think you need to remember the entire list, but definitely top 3 countries you should remember. The third one is which country? Indonesia. Okay. Wheat के भी आप top exporting, top producing ये वाले countries याद रखें, especially Russia Ukraine war के बाद wheat काफ़ी news में था, so make sure that you remember about wheat also. Next social issue we have is youth employment की अभी एक report आई है International Labour Organization in the year. Let us see what the report has to say and what are the recent, trends. India experienced severe working hour and employment losses in 2020 and 2021, and Indian youth employment reduced or deteriorated in 2021 compared to 2020 according to the Global Employment Trends for Youth 2022 report जो कि ILO release करता है. So the first factual point is this report you need to remember, right, which is released by ILO. Prelims में ये question पूछा जा सकता है. Then let us see what are the key findings of this report. The first is the role of pandemic. The report says कि pandemic की वजह से pandemic has hit the situation even worse than it was earlier. Young people are affected more than the adults.
and this also says that the situation is particularly severe for very young people, especially 50 to 20 years के लिए ये काफ़ी severe situation है. उसके बाद कुछ इंडिया के perspective से और बातें करी हैं, where it says quality education and training opportunities are something which is the need of the hour and should be conducted so that चीज़ों को बेनिफिट, चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके. देन वी हैव अनइक्वल एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन. लेट मी जस्ट गिव यू सम ऑफ द statistics for this. So it says unequal access to online education, right? Unequal access to online education. What do we understand by this unequal access to online education? Actually, recently क्या हुआ है, only 8% of such children in rural areas and 23% in urban areas have had access to online education. How much? 8% and 23%. 8% in rural areas and 23% in urban areas have had the access of online education, and this figure is really alarming. You can imagine the impact of on studies the children are facing, the future of our country are facing. Next we have learning regression, क्योंकि चीज़ें छूट गई हैं, ठीक है. तो the children I'm talking about, they're forgetting things. I also have a younger brother, so COVID के टाइम में काफ़ी टाइम तक वो घर रहा और उसकी वजह से आई ऑल्सो रियलाइज कि उसका लर्निंग रिग्रेशन हो रहा है. ही इज़ ऑल्सो फॉरगेटिंग थिंग्स, ही इज़ ऑल्सो फॉरगेटिंग द कॉन्सेप्ट. सो वी ऑल हैव, आई थिंक मस्ट हैव रियलाइज दिस एट अ पर्सनल लेवल ओनली, ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट अगेन सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स की भी बात देख लेते हैं हम, तो इंडिया में 92% in India 92% lost at least one foundational ability in language, ठीक है. So 92% of the children lost at least one foundational abilities in language, and 82% of them lost the foundational abilities in mathematics. This is what the report suggested. This is what the report says. Next, when we talk about youth, low female youth market participation, ये हमारा वैसे भी है, irrespective of what the pandemic or what the ILO has to say. High youth employment losses. So this is also happening along with private school teachers are less paid. अगर हम state के जो schools होते हैं, government schools होते हैं, if we compare it with the private school, they are very less paid. The private teachers are very less paid compared with the state schools. Abuse reports, abuse की भी काफ़ी reports देखने को मिलती है, be it especially female abuse I'm talking about, be it verbal abuse, be it physical abuse, be it sexual abuse. So these abuses have also been reported. Okay, certain prelims facts about International Labour Organization. It is a specialized agency of UN, just like the UNSC. Then we have 1946 में ये फॉर्म हुआ था. स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है. लेबर इश्यूज को ये डील करता है. एंड इफ दे आस्क इफ इंडिया इज अ मेंबर टू इट, सो येस, इंडिया इज अ मेंबर टू ILO. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव रेगुलेटिंग डिजिटल लेंडिंग. डिजिटल लेंडिंग को रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रोविजंस हम पढ़ेंगे, ठीक है. RBI हैज रिलीज गाइडलाइंस टू रेगुलेट डिजिटल लेंडिंग बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द वर्किंग ग्रुप डिजिटल लेंडिंग 2021. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिजिटल लेंडिंग? ईज ऑफ डूइंग लेंडिंग में ये हेल्प करता है कि RBI है, या फिर और यू कैन से दैट डिजिटल लेंडर्स डिसबर्स लोन्स थ्रू द डिजिटल चैनल्स. जो डिजिटल लेंडर्स हैं, they disburse loans through digital channels. Then we have transparency. You all must have witnessed the cases of fraud and all. तो डिजिटल लेंडिंग से ये वाले केसेस भी कम हो जाएंगे and transparency could be achieved. Need for regulation. Though there are so many benefits of digital lending, but at the same time there is also a urgent need to
regulate this lending, because apart from the benefit there is, you know, क्योंकि हम regulation की बात कर रहे हैं, there have been instances of what? Breach of data, unfair business practices, digital unawareness. What? Breach of data, digital unawareness. So this education part becomes really important, wherein we need to aware people regarding the new digital technology. So these are some of the problems. What are the guidelines this thing has RBI has suggested? ठीक है, it says no third party. What do we mean by this? So जितने भी loans होते हैं ना, loan dispersal जितने भी होते हैं will be between the bank account of the borrower and RBI regulated digital lender, and the charge payable to the third party will, you know, you can say will be paid by the lender and not by the borrower. ठीक है, बोरोवर को कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, लेंडर को ही सारा चार्ज पे करना है. दैट वाज अबाउट इट. नेक्स्ट पेपर हम डिफेंस की बात कर लेते हैं. एंड द फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज AGM 88 हार्म. तो अगेन लाइक आई ऑलवेज टेल यू कि defense related जितने भी news होते हैं, there are just 2-3 things you need to remember. First, if there is any missile, if there is any technology, you need to remember to which state or to which country. By state here I mean country, to which country it belongs to. So if you talk about AGM 88, it belongs to United States. So US announced it has sent AGM 88 HARM missiles to Ukraine, ठीक है, designed to track and destroy the radar system. So that's not that much important, but what's important is to remember the name of this country, which is a move that could significantly boost the countermeasures against Russia air defenses. But हमें US यहाँ पर याद रखना है, US याद रखना है, जो कि इन्होंने भेजा है US Russia war में. Okay. Up next we have Him-Drone-a-thon program. Very important. ठीक है, आर्मी का ये प्रोग्राम, इंडियन आर्मी का ये प्रोग्राम है. सो इन एसोसिएशन विद ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया. देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये प्रोग्राम है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या एग्जैक्टली इसमें ये करने वाले हैं. सो दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन लाइन विद मेक इन इंडिया इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एंड इट एम्स टू कैटलाइज एंड प्रोवाइड फोकस्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडियन ड्रोन इकोसिस्टम. सो दिस इज अबाउट ड्रोन, एज द नेम ऑल्सो इंडिकेट्स हियर. Right? In India, to build drone capabilities for meeting the needs of Indian troops at front line. जो Him-Drone-a-thon है, ये एक pan India program है, and it seeks to connect all the stakeholders, including what? ये सबको connect करेगा, be it industry, be it students, be it, you know, research developers, software developers, academy, और जितने भी drone manufacturers हैं, उन सबको ये connect करेगा. ठीक है? I have a picture for you. So अगर हम कुछ कैटेगरीज की बात करें कहाँ पर ये यूज हो सकता है, सर्वेलेंस में, रिसर्च एंड रेस्क्यू, हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन्स, नैनो ड्रोन्स, दीज आर बेसिकली द प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैटेगरीज, right? Not the use one. These are the product categories. So could be the nano ones, could be the heavy ones, right? और भी categories हैं जो अभी हम announce नहीं हुई हैं but would be announced soon. Activities क्या है? Interactions between user and development agencies. Visit forward areas to understand the ground perspective. तो ground perspective समझने के लिए भी इनको use किया जाएगा. Hand holding for internal development, facilitation of फील्ड ट्रायल्स एंड प्रोडक्ट इवैल्यूएशन. तो ये कुछ चीज़ें करी जाएंगी जो अभी तक हमने प्लान करी है यूजिंग दी ड्रोन्स, राइट, डिफेंस में. ऑलराइट, अप नेक्स्ट वी हैव एक्स वज्र प्रहार 2.0, सॉरी 2022. वज्र प्रहार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहती है, एंड इट इज़ अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑल कंट्रीज, बिटवीन स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. Began in Himachal Pradesh. Okay, so these two countries you have to remember, India और US का है ये. The drill aims to improve the interoperability between the special forces between both the countries. और भी जो exercises हैं India और US के बीच में, let's just quickly get their names. This is युद्ध अभ्यास. Okay, this is युद्ध अभ्यास जो कि आर्मी का है. ठीक है, आर्मी की एक्सरसाइज है. Then we have, so this is exercise वज्र, बट यहाँ पर जो युद्ध अभ्यास है, अगेन इट ऑल्सो बिलोंग्स टू यूएस. इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड यूएस आर्मी में. कॉप इंडिया एयरफोर्स की है. रेड फ्लैग यूएस मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज है. मालाबार हमें पता ही है, जो कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया,
US, जापान और ये सब कंट्रीज आते हैं, ठीक है, along with India of course, right? So these are just the factual points. There's nothing much to understand about it. So just you need to just cram them कि अच्छा ये वाली exercises belongs to these many countries, or these are the bilateral exercises between which all countries. That's all you need to remember. Up next we have butterfly mines. What is it? नाम बड़ा interesting है. Let's see what is it. UK Ministry of Defense, in its intelligence assessment of the ongoing war in Ukraine, has sounded an alarm on the possible use of PFM-1 series butterfly mines by the Russian military in Donetsk and this Kramatorsk region. Let me just show this to you. Eastern side pe, though we have covered this topic really comprehensively in our previous lectures about the Russia-Ukrainian war, you should just go check it out, अंडरस्टैंड द इंटायर इशू. ये इसके ईस्टर्न पार्ट का जो डोनास और लोहांस वाला रीजन है, यहाँ पर जो है रिबेल्स ने ये अपना ऑक्यूपाई कर लिया था, एंड वी हैव द एंटायर स्टोरी देयर. बट just to give you this glimpse of this, I thought to put this map. So PFM1 and PFM1S are the two kinds of anti-personal landmines. So this is what landmines that are commonly referred to butterfly mines, या फिर green parrots भी हम इनको बोलते हैं. आपने देख लिया ये कहाँ से आए हैं और किस चीज़ के लिए हमने इनको यूज़ किया है. And these are basically landmines, right? चलिए. Up next we have Trans-Himalayan Network. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क. वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है. इस टॉपिक में 3 कंट्रीज आर इन्वॉल्व, इंडिया, नेपाल, चाइना, ठीक है. क्योंकि चाइना इन्वॉल्व है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंडिया, नेपाल, चाइना तीनों कंट्रीज इन्वॉल्व हैं. We are going to understand the relationship between between Nepal, India and Nepal, China, ठीक है. In terms of everything, holistically हम समझेंगे. Cultural ties हम देखेंगे, civilizational ties हम देखेंगे, economic ties हम देखेंगे, political ties देखेंगे. Everything we are going to understand, okay? So, but ये basically क्या है? ये एक चाइना का जो हमें पता है BRI Belt and Road Initiative है, will involve the building of railways and communication network. Let me just take you to this map first. Just have a look at this. I'll be elaborating it in a while, but before that you need to understand the story. So we know that India has many common things with Nepal, like that of civilization, okay? Like that of what? Culture. Civilization is one. हमारे बहुत सारे कल्चरल टाइज भी हैं, एंड दोनों की ही जो लैंग्वेज है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी एक्चुअली, तो बट आप 2-3 यू कैन एनी डे राइट, ठीक है. सो जो अभी चाइना वी नो इज इन्वेस्टिंग इन नेपाल in terms of in a lot of areas actually, in industries, in human resource development, in health, in sports, in education, and majorly in infrastructure, ठीक है. But does that mean, or the major question arises here, कि does China, like Sri Lanka, like it did with Sri Lanka and Pakistan, is trying to trap Nepal in its debt trap diplomacy? The answer could be yes, because the kind of investment China is doing in Nepal in terms of what, in the areas of what, majorly in infrastructure, then a lot of others as well, like for example education, sports के उसमें health infrastructure में, तो बहुत सारी चीज़ों में China is investing, ठीक है. So the yes could be a probable answer for this. बट हमारे लिए क्या important है कि हम इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा समझने की कोशिश करें. तो इंडिया के पर्सपेक्टिव पे जाने से पहले हम थोड़ा सा नेपाल और चाइना क्या रिलेशन होल्ड कर रहे हैं अभी वो देख लेते हैं. सो 2019 में वाइल इंडिया शेयर एफडीआई इन नेपाल, इंडिया का जो शेयर था एफडीआई में वाज 30%, वाइल चाइना का शेयर वाज 40%, ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट एफडीआई, इंडिया का शेयर था 30%, चाइना का शेयर था 40%. वी आर टॉकिंग अबाउट 2019, सो यू कैन सी
चाइना इज वे अहेड ऑफ अस, ठीक है. देर इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट जो कि लासा टू काठमांडू रेलवे प्रोजेक्ट हम इसको बोलते हैं, विच इज गोइंग टू, ठीक है, यहाँ पर ये जो रेल प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, विच इज गोइंग टू गेट completed in 2025 एंड इट विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू लुम्बिनी. लुम्बिनी आपको पता है इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सो दिस could be a vulnerable point for us. This could create the vulnerabilities, तो यहाँ पर problems create कर सकता है. China maybe can even try to capture the markets of, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के हमारे यूपी बिहार स्टेट्स पड़ते हैं, तो China can even try that. So this is one project China is investing into, so this is a point of concern for India as well. ठीक है, ये आप याद रखें. अब हम थोड़ा सा इंडिया के साथ रिलेशन देख लेते हैं, इंडिया और नेपाल के साथ. सबसे पहले you need to understand that we have always tried to keep the relations very cordial with Nepal. ठीक है, हम कुछ investments की बात कर लेते हैं. So we have actually a lot of ties, be it political, cultural, spiritual. ठीक है, political, cultural, spiritual, then you can say historical. So we have these ties with Nepal. ठीक है, 17th of June 1947 में एक agreement sign हुआ, और you can say that this basically established this date. On this date we established an Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship. Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship. This date you can remember whenever they ask you about Indo-Nepal relation. This date is really, really important. This treaty is really, really important. And Nepal's 1/3 FDI comes from India. 1/3 FDI comes from India. We're talking about Nepal ka FDI. These are few points. Apart from that, you can also quote certain international groups, जैसे BIMSTEC हो गया, SARC हो गया, BBIN हो गया, ठीक है, जिसके साथ हम कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट राइट द नेम्स ऑफ दीज ग्रुप्स. सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ठीक है, BBIN हो गया, वेयर इन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, ये चारों कंट्रीज मिलकर वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम्स. वी ट्राई टू सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ आर एरियाज. ठीक है, तो इन इंटरनेशनल लेवल्स पे भी हम नेपाल के साथ कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस 2019 की अगर मैं बात करूं, 2019 या फिर यू कैन से ये था हमारा इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट. बट वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट KP ओली, ठीक है, उनके टाइम से जो नेपाल और इंडिया का रिलेशन है वो डिटेरियोरेट हुआ, राइट. we all must agree with this. ठीक है, 2019 में we also faced a issue with Nepal, जो कि आपको लिम्पियादुरा वाला जो इशू है, you all must have heard if you follow news, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था. लिम्पियादुरा काला पानी वाला जो इशू हुआ था वो भी हमने नेपाल के साथ फेस किया. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम एक अलग लेवल पे उनके साथ we are facing with Nepal. And what was that issue actually? ये लिपू लेक माउंटेन के पास जो हमारा again I'm not going into this particular topic because this is a different topic altogether. We have again already covered it in our previous lectures. You can see it. But Nepal has two tri-junctions with India and China, and the one junction and the one is the dispute now, ठीक है, which is लिपू लेक in काला पानी, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड वाले रीजन में सिचुएटेड है, राइट. 1860 में हमने सुगौली ट्रीटी के बारे में भी सुना था, साइंड बाय नेपाल एंड ब्रिटिश. इंडिया आइडेंटिफाइड काली रिवर एक्चुअली एज नेपाल बाउंड्री विद द इंडियन. तो काली रिवर का जो कहाँ पर ओरिजिन है, उसी पे ये पूरा डिस्प्यूट बेस्ड है, राइट. सो Nepal basically claimed the river to be Kalapani is west and is the main Kali, and thus Nepal has the territorial rights to it. So as I've told you, the entire dispute of this Kalapani region revolved around what? The origin of this Kali river. ठीक है,
So again, we are not going into this thing, but I want to tell you कि we have a lot of issues also with Nepal. ठीक है, तो हम काफ़ी सारे issues भी face कर रहे हैं along with the treaties and the trade agreements we have. So recently अभी क्या हुआ है, that China is trying to make this trans-Himalaya multi-dimensional connectivity also with Nepal. ठीक है, जो कि आपको ये केरुंग एरिया से दिखेगा. ठीक है, तो ये कुछ चाइना के डेवलपमेंट्स हैं जो कि वो ईरान को ल्योर करने के लिए कर रहा है. ठीक है, तो ये आप याद रखें. एंड एक और पॉइंट है, चाइना के लिए जो नेपाल है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना की जो हमें पता है 5 फिंगर स्ट्रैटेजी, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड ऑफ, माओ के टाइम पे था. उसके बाद क्योंकि ग्लोबल क्रिटिसिज्म हुआ इस पूरे ट्रिटी का बहुत ज़्यादा, तो उसको स्टॉप कर दिया गया. बट जिनपिंग के टाइम पे इन्होंने फिर से कंटिन्यू करी है ये स्ट्रैटेजी. ठीक है, 5 फिंगर स्ट्रैटेजी, जहाँ पर वेयर इन लद्दाख, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत आर दी अदर कंट्रीज विच आर इन्वॉल्व इन द 5 फिंगर दिस थिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है, so this was also one point you can remember, that what China is trying to do with Nepal and indirectly somewhere with us also. Up next we have Super Garuda Shield exercise. Again an exercise, just 2-3 points again you need to remember, a very factual slide. United States, Indonesia, Australia, Japan and Singaporean militaries have begun annual joint combat exercise on Indonesia, Sumatra Island. So which all countries? US, Indonesia, Australia, Japan, Singapore. ठीक है, what are the concerns? The expanded drills are seen by China as a threat. ठीक है, तो चाइना का एक प्रॉब्लम है क्योंकि इंडो पैसिफिक वाले रीजन में ये है. ठीक है, चाइना स्टेट मीडिया हैव एक्यूज द यूएस ऑफ बिल्डिंग इंडो पैसिफिक अलायंस लाइक नेटो टू इंटेंशनली प्रोवोक द कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे हैव क्लेम्ड. तो चाइना इस चीज से बॉदर हो रहा है. दिस बेसिकली दिस एक्सरसाइज इज डिजाइन टू स्ट्रेंथन द इंटरऑपरेटेबिलिटी, the interoperability, capability, trust and cooperation in support of free and open Indo-Pacific. अगर हम specific Garuda Shakti की बात करें, so this is a bilateral exercise between special forces of armies of India and Indonesia. So this is the factual point you need to remember. Garuda Shakti exercise जो है, this is Super Garuda, but इससे पहले था Garuda Shakti, which was a exercise between India and Indonesia in which special forces of armies. Right. Up next we have science and technology, and here we start with a disease, vasculitis. Okay, अभी एक recently एक actor ने tweet किया था about this particular this thing disease. That is why it is in news. What exactly it is? So to understand it in a very simple words, तो blood vessels में कुछ inflammation हो जाता है, कुछ infections हो जाते हैं blood vessels में, and we call it vasculitis. ठीक है, inflammation एक natural response है body के immune system का to any injury or infection which is normal course can help the body fight invading germs. ठीक है, however vasculitis में क्या हो रहा है, body का जो immune system है turns on healthy blood vessels causing them to swell up and narrow down. इसके कुछ impacts देख लेते हैं कि कौन कौन से body part पे क्या क्या impact पड़ता है. So if we talk about nervous system, स्ट्रोक आ सकता है नर्वस सिस्टम पे. दिस इज वन ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ वास्कुलाइटिस. हार्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा हाइपरटेंशन हो गया, माइकोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया. डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, वेयर इन ब्लडी स्टूल्स आपको आ सकते हैं, एब्डोमिनल पेन आप फेस कर सकते हो. ठीक है, उसके अलावा जॉइंट पेन भी आप फेस कर सकते हो. स्किन पे भी काफ़ी सारे रैशेज और वो सब आप यू कैन फेस. देन वी हैव आई, इट इम्पैक्ट्स द आई ऑल्सो, वेयर इन इट रिड्यूस योर विजुअल कैपेसिटी. देन यू हैव नोज आपका ब्लीड कर सकता है, लंग्स में भी आपका कफ हो सकता है, किडनीज में भी आपका glomerulonephritis you can face. Then we have muscle pain you can face. ठीक है, कुछ general symptoms की अगर हम बात करें, fever, headache, weight loss वगैरह आपको हो सकता है. Right, so these are the symptoms or these are the body parts wherein this particular disease can impact you. Up next we have novel Langya Henipavirus. Okay, let's see कहाँ से ये वायरस आया है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या एग्जैक्टली कहाँ ये किसको क्या कॉज करता है, कैसे इन्फेक्ट करता है. लेट्स सी एवरीथिंग. सो दिस वायरस हैव बीन रिपोर्टेड इन चाइना. ठीक है, चाइना में ये रिपोर्ट हुआ है. द न्यूली डिस्कवर्ड वायरस इज अ फाइलोजेनेटिकली डिस्टिंक्ट हेनिपावायरल अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी, जो कि एक जूनोटिक हेनिपावायरल है इन फेब्राइल पेशेंट इन चाइना. ठीक है, तो हम कुछ अभी
इसके सिम्टम्स वगैरह देख लेते हैं और कहाँ पर ये मिलता है वो देख लेते हैं. सो दिस वायरस आर फाउंड इन बैट्स, ठीक है, रोडेंट्स या फिर श्रूज में ये मिलता है. एंड इट इज नोन टू इन्फेक्ट व्हाट humans and potentially cause the fatal disease. So it can even cause the death, and it can also infect the human. This is something which is to be remembered here. There is currently no vaccine, कोई vaccine नहीं है ना or therapy for this virus. Hence the primary option is सपोर्टिव केयर टू ट्रीट जूनोटिक डिजीज कॉम्प्लिकेशन. तो जो भी जूनोटिक डिजीजेज हैं उन्हीं को हम संभालें या फिर उन्हीं के लिए प्रिकॉशंस लें, उन्हीं को स्प्रेड हम रोक सकें. दैट्स द ओनली प्रिकॉशन अवेलेबल आउट देयर फॉर दिस डिजीज. देयर इज नो वैक्सीनेशन. तो कोरोना भी जब आया था, कोविड-19 के टाइम पे भी देयर वाज नो वैक्सीनेशन अवेलेबल. बट आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट इवन कंपेयरिंग दीज टू डिजीजेस, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर व्हाट एग्जैक्टली इज इट रिलेटेड विद. इफ नॉट ऑल द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. कुछ ज़्यादा बायोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमने नहीं जानना है, बट एटलीस्ट यू मस्ट रिमेंबर कि ओके इट इज़ रिलेटेड विद दिस. चाइना से शुरू हुआ था और रैट्स आदि एजेंट्स, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अप नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्चेस इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिजीज. नाउ व्हाट इज दिस लंपी स्किन डिजीज और कौन से एनिमल्स में हमें ये देखने को मिली है? लेट्स सी. सो Union Minister for Agriculture and Farmer Welfare launched this indigenous vaccine Lumpy Pro vaccine, or you can say VAC-IND, to protect livestock from the lumpy skin disease. Lumpy skin disease होता क्या है? It is सबसे पहला the first factual point you need to remember कि किससे होता है. Is it through bacteria, virus or other pathogen? So it is through virus. ठीक है. द डिजीज इज कैरेक्टराइज बट बाय व्हाट आर द सिम्टम्स? फीवर होता है, एनलार्ज सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट. बहुत सारे मल्टीपल नोड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट, स्किन में. Additionally, the disease often result in chronic debility, reduced blood, milk production, poor growth, infertility, abortion, and sometimes even death of the animal. Let me just show you this thing here. Lumpy disease, lumpy disease के बारे में हम देख लेते हैं. इसका जो incubation period है between 4 to 14 days post infection. Initial period में आपको high fever देखने को मिलेगा animal में, और lymph nodes जो हैं, lymph nodes आपको देखने को मिलेंगे, swollen lymph glands आपको देखने को मिलेंगे, right. Morbidity भी है इसका 5 to 45%. So like I've told you, death भी हो सकती है. Animal may develop the large and firm modules of 5 centimeter to again the diameter and the measurements you don't need to remember, just that कि lymph nodes यहाँ पर प्रोड्यूस हो lymph nodes यहाँ पर बन सकते हैं in this lumpy disease. ठीक है, इसी के बारे में ये न्यूज़ था. Up next we have nano urea. Nano urea, India will produce 6 crore bottles of nano urea and make it available to the farmers 2023 तक. ठीक है. nano urea है क्या? This is a urea we know. अगर थोड़ा सा भी केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो इज रिलेटेड विद नाइट्रोजन. इसका फॉर्मूले में भी नाइट्रोजन आता है. इट्स अ केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, व्हाइट कलर में होता है, विच आर्टिफिशियली प्रोवाइड्स नाइट्रोजन, अ मेजर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. नाइट्रोजन जनरली अवेलेबल नहीं होता है, वी नो. सो यूरिया इज वेरी मच रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. इनफैक्ट हमारे यहाँ पर यूरिया पे सब्सिडीज भी इतना मिलता है दैट फार्मर्स समटाइम्स मेजरली मिसयूज इट. ओके, लिक्विड नैनो यूरिया अब हम बनाने का सोच रहे हैं. इज एसेंशियली यूरिया इन द फॉर्म ऑफ नैनो particles. It is patented chemical nitrogen fertilizers produced by IFCO. ठीक है. Let us read out certain benefits. So it basically reduces the input cost. ये environmental friendly भी होगा, unlike the normal urea. It improves the nutritional value also, increase the farmer's income also. It enhance crop productivity, और ये cheap भी है than the conventional urea जिस पे हमें subsidy मिलता है. So these are some of the benefits of this particular urea. ठीक है, ये ऐसे bottle में आता है, liquid bottle में आता है. Up next we have Advanced Towed Artillery Gun System, or ATAGS. Recently, indigenously developed howitzer gun ATAG became a part of the 21 gun salute during the Independence Day. तो इसलिए क्योंकि ये ऐसा हुआ है तो हमारे लिए पढ़ना भी ज़रूरी है. Let us see some of the facts regarding this. So it was developed by which agency, which organization? DRDO, which is Development Defense Research and Development Organization. DRDO ने develop किया है. And this becomes, I guess, is one of the most important facts you need to remember in this particular slide. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 2 guns from each company are undergoing trials and 2 more guns are to join the trial later. ठीक है. And basically
कुछ की फीचर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक ड्राइव है इसका, हाई मोबिलिटी है, काफ़ी जल्दी हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, तो क्विक डिप्लॉयबिलिटी है विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी वॉर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। ऑक्सिलरी पावर मोड है, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है, ऑटोमेटेड कमांड है, कंट्रोल सिस्टम है, 6 राउंड मैगजीन्स यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड 3 राउंड मैगजीन्स, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स एंड सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट दिस वन। डिजी यात्रा, ओके, डिजी यात्रा देख लेते हैं, व्हाट डिजी यात्रा इज, व्हाट इज इट रिलेटेड विथ, ये क्या है। अगेन बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट वी मस्ट हैव अ आइडिया ऑफ वॉट एवर टॉपिक वी कम अक्रॉस इन द न्यूज़ पेपर स्पेशली, तो हमें आइडिया तो होना चाहिए। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड रन बाय GMR अनाउंस्ड सॉफ्ट लॉन्च ऑफ द सेंटर्स डिजी यात्रा इनिशिएटिव, ठीक है। डिजी यात्रा है क्या, ये एक बायोमेट्रिक एनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस है। So this line only summarizes the entire meaning of what Digi Yatra and what the how is it related with the civil aviation industry. ठीक है, बेस्ड ऑन द फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी आप याद रखें। और ये है क्या, ताकि हम जो है पेपरलेस और सीमलेस ट्रैवल प्रोवाइड कर सके पैसेंजर्स को, एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके पैसेंजर को, और चीज़ों को कॉस्ट इफेक्टिव बना सकें, राइट। सो इट इज़ अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑर्डिनेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, राइट। इफ वी टॉक अबाउट सर्टेन अदर थिंग्स, तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे ये हम यूज करेंगे, राइट। रजिस्टर्ड यूजर्स विल बी यूजिंग इट एंड इट इज गोइंग टू एनहांस द सिक्योरिटी, not just for the airport, for the people, for the customers, and it will going to make the entire process hassle free, right. So these are some of the benefits you can quote in your examination. Up next we have environment, ecology and geography, and the first topic we are going to read over here is Indian virtual herbarium. Okay, herbarium क्या है कि जहाँ पर हम जितने अपने फ्लोरा होते हैं उनके रिकॉर्ड्स जो हैं हम स्टोर करके रखते हैं। Indian virtual herbarium, it is the biggest database of the country's flora, right, developed by what scientist of Botanical Survey of India, which is a Indian which is what the Indian virtual herbarium, ठीक है। और किसने लॉन्च किया था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो बेसिकली ये है क्या, क्योंकि बेटर हम रिसर्च वगैरह के लिए अगर इफ विल हैव सच डेटा, इफ विल हैव सच virtual data present with us, it will help in a lot of research, a lot of study, ठीक है। चीज़ों को हम बेटर तरीके से स्टोर कर सकते हैं, ठीक, एक प्रॉपर डेटा हम बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये वर्चुअल हर्बेरियम इज गोइंग टू हेल्प द कंट्री। दिस इज द पिक्चर, दीज आर सम ऑफ द स्टोर्ड, यू कैन से फ्लोरा, जिसका पिक्चर मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट से ही लिया है। सो यू कैन सी हाउ दे प्रिजर्व इट। नेक्स्ट वी हैव भितरकनिका नेशनल पार्क। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो क्रोकोडाइल्स हैं इन द पार्क हैज़ रीच अ सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। सो एंड विच कुड बी अ बिग प्रॉब्लम इफ इट इज़ नॉट एड्रेस्ड ऑन टाइम। तो ये क्रोकोडाइल एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए हैं। भितरकनिका में वी नो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है। सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में आपको जब इन्वायरमेंट के ऑप्शंस दिए जाते हैं, क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए जाते हैं, क्रोकोडाइल you can expect crocodile to be one of the options. तो crocodile का जो भी लोकेशन वगैरह है, जो भी इनके बारे में facts हैं, you must remember, you must go through once before you sit in your examination. So Baitarani National Park, the second largest mangrove forest in India after Sundarbans, is known for a successful conservation program. और यहाँ पर क्योंकि crocodile का नंबर कम हो रहा है, बट हमारे लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है to understand the location of it. So let's see. It is situated in Odisha. Which country? Which state? Odisha. As you can see, भितरकनिका National Park situated in Odisha. Odisha में और भी बहुत सारे important चीज़ें हैं, बहुत सारे national parks, wildlife sanctuaries हैं, which are situated in Odisha and which are important for our examination too. Like for example, Chilika Lake is one of them, which is situated here, as you can see. Right. Apart from that, Gaher Mata Marine वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं यहाँ पर। ओलिव रिडले टर्टल्स के बारे में इफ़ यू हैव इफ़ यू रीड, यू ऑलवेज कम अक्रॉस दिस गायर माता, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिमलीपाल, यू विल सी सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। सतकोसिया भी आपको मिलेगा, नंदनकानन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट्स यू हैव टू रिमेंबर व्हेन इट कम्स टू ओडिशा, राइट। चलिए
Up next, and the last topic of the day we have is Kachal Island in the Nicobar. Recently, क्या हुआ है? United States National Aeronautics and Space Administration NASA recently highlighted the loss of mangrove cover over this island, which is a part of Nicobar archipelago. Archipelago is what? Is a group of islands. ठीक है, तो यहाँ पर जो है what they have recently highlighted that there is a loss of mangrove in this area. ठीक है, more than 90% of the mangrove cover on this island is lost. ठीक है, तो अभी हम, this is the island I was talking about. Let me just take you to this bigger map of Andaman and Nicobar, and let me just show you. This map is really important, not just for this particular island we just read in a present context, but even otherwise ये पूरा map ही important है. Let's just see. सबसे पहला जो आता है, this entire thing is this entire portion is Andaman. ठीक है, wherein the first part is North Andaman. यहाँ पर आपको Saddle Peak मिलेगा. Then we have Middle Andaman and Port Blair जो capital है, you'll see it here. Apart from that, you will also see Sentinel Islands. This was also in news. Like, there was some foreigner, there was some traveler, कोई tourist था, he went there and died. Okay. Then you have Little Andaman over here. Then we will see, this is Car Nicobar. Car Nicobar में सबसे पहला you will see these Bompoka, Nankauri, Great Nicobar, Little Nicobar, and this is Kachal Island जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. This is a part of Nicobar Islands. ठीक है, so this you need to remember. This is 11 degree north channel Andaman Sea. ठीक है, sorry, this is not channel, this is 11 degree north, and just the longitude and latitudes are mentioned here. But you have to remember the channels also, which channel is situated at which place and which all channels are separating कौन से दो islands और कौन से दो areas. ठीक है, the channels also you have to remember, जो parallels होते हैं 8 degrees, 9 degrees, 10 degrees. So you have to remember that. That's very important for your factual point. So yeah, that was all about today's lecture. I hope it was helpful to you. We'll keep coming up with August current affairs like this. Till then, stay tuned. Thank you so much.